This video is 4K at 30 FPS. EIS electronic stabilization off. Currently I am shooting at 2.7K at 60 FPS. Again, electronic stabilization is off and I am recording from internal mic. Currently I am recording at 2.7K at 60 FPS. Electronic stabilization is on and currently recording from internal mic. Currently I am recording at 1080 pixel at 120 fps, recording from the internal mic, and electronic stabilization is off. Actually, electronic stabilization is not supported at this FPS, 120 fps. Currently I am recording at 1080 pixel at 60 fps. Electronic stabilization is on and I am recording from internal mic. Currently I am recording at 720 pixel at 120 fps. I have switched on the wind noise reduction and currently using internal mic for the recording. Currently I am recording at 1080 pixel at 60 fps. Wind noise reduction is on and I am currently recording from the internal mic, and of course electronic stabilization is also on, so let's see how it performs.
I am currently recording at 1080 pixel at 60 fps, and currently electronic stabilization is off. So let's see how it performs. So all the windows are open in the car, so it will also test the wind reduction, the wind noise reduction capability. So I will also, इसके बाद मैंने कैमरा को विंडो के बाहर भी लगा के देखूंगा कि how it records and what is the capability of its wind noise reduction. Currently I am cruising at 55-60. So let's see how it performs. बेसिकली अगर मैं ओवरऑल इस कैमरा की बात करूं तो इट इज़, चलिए कैमरा की बात मैं बाद में करूंगा बिकॉज आई डोंट नो कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन ऑफ होने के बाद हाउ द वीडियो विल बी रिकॉर्डेड. सो मैं ड्यूरिंग द होल रिव्यू आई विल टॉक अबाउट कैसा ये, what is the pros and cons of this camera. But in short, I think less than 10,000 it is a perfect choice. The only cons I felt is कि low light condition में the camera doesn't perform so well. So but for me, action, most of the action scenes will be shooted at in the daylight, so that would not be a much issue. और ऐसा नहीं है कि लो लाइट में बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप वीडियो में देखिएगा तो इट विल टेल यू कि कैसा परफॉर्मेंस है. काम चलाने लायक है आई वुड से. तो दिस इज़ द सेम रोड. मैंने इसमें स्टेबलाइजेशन ऑन करके भी चेक किया है एंड लेट्स सी विदाउट स्टेबलाइजेशन कैसा काम करता है. Currently I am at cruising at 55. All the windows are open, so this will give you an idea कि कैसा its wind noise reduction कैसा काम कर रहा है. केबिन में बहुत हल्ला है due to the wind noise, so I think it will perform कैसा होता है. तो मैं अगेन सेम रोड पे ड्राइव करना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दिस टाइम द कैमरा विल बी आउट ऑफ द विंडो एंड करंटली आई एम शूटिंग एट 1080 पिक्सल 60 fps. विंड नॉइज रिडक्शन इज ऑन एंड स्टेबलाइजेशन इज ऑन. सो लेट्स स्टार्ट. Wind reduction is on जब मैं एडिट कर रहा हूँ एक्चुअली. सो लेट्स सी कैसा होता है. So all the windows are open and काफ़ी